आपकी 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन से आप काफ़ी मुतासिर हो गया, आपने बड़ी मेहनत की, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपकी सरबराही में ये डिपार्टमेंट अच्छे हाथों में है। तो बेसिकली जो आपने हर एक पेज पे, हर एक स्लाइड पे कोऑर्डिनेशन की बात की इंडस्ट्री के साथ, मगर ऐसा होता नहीं है। आप देख लीजिए, आप पिछले 10 साल में एक भी आप मीटिंग देख लीजिए जो किसी डायरेक्टर साहब ने इंडस्ट्री के साथ की। हालांकि हम काफ़ी जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री काफ़ी जुड़ी हुई है, हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आपके साथ हैं, हमारे MOUs आपके साथ साइन हैं, हम आपके ITIs के IMC को चलाते हैं, मगर सिर्फ इस गारज से कि हम चाकों पर दस्तखत करते हैं और जो प्रोक्योरमेंट होती है उनकी चाकों पर दस्तखत करते हैं। बाकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल है ही नहीं। उस पर थोड़ा सा आपको एक कोई शिकायत नहीं, मैं करेक्ट इज अ प्रॉब्लम, इस पर आपको जोर देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम ITI से अपना वर्क फोर्स ले इंडस्ट्री, मगर ऐसा होता नहीं है। जब भी हमने देखा कि हमें 20 लोगों की ज़रूरत है, नहीं निकलते हैं, इतने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। आजकल जो हमने देखा है, पिछले जब से हमने इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हिस्सा लिया 2007 से, जब वो 1396 ITIs को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अनाउंस किया, तो हमारे पास फंड्स भी आ गए, वो भी फुल्ली यूटिलाइज हो गए। फिर स्ट्राइल स्कीम भी आ गई, वो भी फुल्ली यूटिलाइज हो गई। 100% हमारी अचीवमेंट है उसमें तकरीबन। तो हमने ये देखा कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ नौकरी की दरख्वास्त के लिए जो आपकी सर्टिफिकेट है उसका एनक्लोज करने के लिए आते हैं। हालांकि हमने 12 कोशिश की कि इसमें कुछ ऐसा माहौल बने कि एक प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए बच्चों को कि MSME क्या है, एंटरप्राइजेस क्या है, माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है, और ऐसा होता नहीं है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की प्रेजेंटेशन में हमें लग रहा है कि अच्छे हाथों में है और डिपार्टमेंट भी अच्छे हाथों में है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी भी डेफिशिएंसी है कि आज का ये जो प्रोग्राम है उसको एक रोड मैप, एक अच्छा रोड मैप जो आपने दिया है, हम इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा साथ हमेशा है, आप भी जब भी चाहे, जब भी हमारी ज़रूरत होगी इंडस्ट्री की, पूरी कोऑर्डिनेशन आपके साथ। चेंज करूँगा, हमारे जाने से नहीं होगा, आप हमें ड्राइव करें, आप हमें फोर्स करें। ये इंडस्ट्री इसमें फाइनल आउटकम उसके पास ही, वेट ना करें डायरेक्टर साहब बुलाएं, आप डायरेक्टर साहब के कमरे में पहुँच गए, भाई हम आ रहे हैं, यू हैव टू नॉक एट अस। हम सोच रहे हैं आप हमें जगाएं। नहीं, उनको भी अपना है ना। ये देखिए, मैंने पहले आपको बोला, मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पर है, ये इज सन ऑफ द सॉइल, उनको यहाँ का जो मिजाज है पता है। हम काफ़ी नरम दिल के लोग हैं, ऐसी बात है, हमारा रिजिड एटीट्यूड नहीं है कभी भी। यहाँ पर क्या होता था कि हर चौथे 5 महीने में डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वो चेंज होते थे। जब मुफ्ती साहब यहाँ थे मुझसे कमरे थे, मैंने ही वो आवाज़ वहाँ पर उठाई, मैंने कहा ये क्या मसला है, ये क्या तमाशा है। अभी हम किसी से बात ही नहीं करने की होती है तो वो उसका ट्रांसफर ऑर्डर है, उस चीज़ को काफ़ी हद तक उन्होंने रोका है, तब से काफ़ी तब्दीली आ गई। मगर हमारी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल आपके साथ, आप हमें बताएं हमें कहाँ पर आना है, क्या डिस्कस करना है आपके साथ, हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी बख्शी साहब भी यहाँ पर है। सर, मैं बख्शी सेक्रेटरी जनरल कश्मीर चंबा कमर्शियल इंडस्ट्री, मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी एक प्रेजेंटेशन करी। But I wonder, aren't we late? Our country is focused on a $5 trillion economy, maybe third largest economy. आज से 40 साल जब मैं स्कूल में था तो बास्केट वीविंग था, बास्केट मेकिंग था। मैंने ट्रेन थी, मेरी माँ कहती थी बेटा बेकार बैठो एक टोकरी। आज जब मैंने आज प्रेजेंटेशन में एक वेल्डर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक कारपेंटर, एक बास्केट मेकिंग का 40 साल के बाद ये दोबारा है। आज हमें यहाँ से स्टोर्स हैं, यहाँ एडवांस इंडस्ट्री है, हमें जो एक इलेक्ट्रिशियन वो जो प्लास लेकर और वो
یا کیا کہتے ہیں اسکرو ڈرائیور لے کر نہیں چاہیے، وہ بہت ہے. ہمیں ایڈوانس ٹیکنالوجی والے چاہے. آپ نے لکھا ہے اس میں ہم نے نوٹ کرا کہ اپ گریڈیشن، لیکن یہ ہم بار میں بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ، مشن کے ساتھ اور آئی ایچ ایم کے ساتھ ڈسٹرکٹس میں گیا، اور میں اسکل ڈیولپمنٹ کافی سال 15 سال میں جڑا ہوں. لیکن وہی تعلیم کورس تھا، اور جو انہوں نے کہا کہ ایک جو 2 مہینے کا، 2 مہینے میں کورس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کو 2000 روپے اسٹیپن اور ایک سرٹیفکیٹ دے سکتے. میں بہت اس میں ہوں، لیکن ایک اپ گریڈیشن ٹائم ہے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں کہیں، یا آئی ایچ ایم میں بھی 3 مہینے کا 6 مہینے کا وہ کورس ہے. وہ میں ادھر ہمیں چاہیے یہاں شارٹ سکلز جو اس کا وہ شارٹ ہے یا شارٹ ہے، لیکن ہمیں یہ بہت اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ دیکھا 40 سال کے بعد وہی میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو 40 سال پہلے ہم اسکول میں پڑھا. میں بہت چیف سے کے ساتھ ان کو بھی نوٹس میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو موو ویری فاسٹ. ایون یو ریفر ٹو این ای پی از ناٹ 5 ایئرس اولڈ. این ای پی 2020 میں، اگر ہم این ای پی کا آج کریں کہ این ای پی میں ہمیں کیا کرنا ہے، ایک 5 ایئر پلان ختم ہو گیا. تو وی شوڈ ایکٹ ویری ویری فاسٹ. اور معافی چاہتا ہوں، میں بھی ایسے فنکشنز میں، ایونٹس میں، کانس میں بہت حصہ لیتا ہوں. کوئی شوق ہے 10 پیج میں نے بھی نوٹ کرے، میں گرافس کرتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں، لیکن جب تک آپ گراؤنڈ لیول پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں، یہ پریزنٹیشن رہے گی. اور ایک آپ کی فرام 15 to 29 years ایج گروپ میں Kashmir has the unemployment rate of 32.8%, the highest in the country. Gujarat is at 2.4, Northeast is at 6.4, Chhattisgarh اس سے بھی کم ہے. میں کہا یہی کچھ 15 سے 29 سال یہی تو اسکل ڈیولپمنٹ میں تو یہی چلے جائیں گے. اینڈ آؤٹ یہ میں خود سے دیکھ رہا ہوں، نیشنل یہ جو منسٹری آف اسٹیٹکس اور ہے اس کی فگرس ہیں دسمبر 2024. یہاں منسٹر فائنل یہ مائنورٹی افیئرس کرن رجیجو آئے تھے، ان کے ساتھ بھی ہم نے پہلے انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت اسکیمس ہیں، لیکن اویئرنیس یہ جو ہے آپ نے فارم میں 12 سال سے، لیکن مجھے میرے خیال میں 80% کچھ پتہ ہی نہیں. میرے خیال 90 آئی ریپرزینٹ انڈسٹری. یہ جو پریزنٹیشن آپ نے کی کائنڈلی شیئر تاکہ ہم بھی آگے تو دیں، ورنہ آپ نے پریزنٹیشن کری ہم نے دیکھی اور یہاں کریں. انلیس یہ پریزنٹیشن آپ وائڈلی شیئر نہیں کریں ایسوسیشن میں، آرگنائزیشن میں، جو بھی ہے اگر بھائی یہ اس اویلیبل، اس سے کافی لوگوں کو فائدہ. تھینک یو سو مچ. Two, 3 points just suggestions. Number one is that regarding the industry partnership, my friends have already come out with some of the points. Now, the most important thing is that technology is a completely moving target. You will always be, kind of behind the curve. So I would request you that we need to have some kind of mechanism for coordination with the industry, whereby you are aligned with the technological trends, because it is a very, very fast moving target. By the time that person comes out, the industry is going to need to reprint it. It came out that television. Second point I want to make is that though industry is a very, very important employer, and we have to be cognizant of the fact, but we also have to understand, that there are limitations to aligning the skills to the industry and nature. Because number one, of course, human testing, has its own issues. And there are other opportunities also. That this the service sector, more so in the health sector, the hospitality sector, which is not confined to the state. And I've seen people from the they know all over the country. So this is one area also you need to really emphasize. You have to see the trends not only in India. There is demand for manpower all over the world. So you should have a kind of a planning cell in your department which follows the trends and the manpower requirements.
third very important and somewhat disturbing aspect is that with the the development of the AI, it is going to be a cataclysmic change in the next 5 to 10 years. So, which are the sectors which are going to be severely affected, and which are the sectors which are going to which are going to survive and thrive? So, my request to you is that you should have a proper planning, and these future trends have to be properly understood and analyzed. Otherwise, we are making so much of effort and things like that. Very fast changes are happening in the world, and we must take advantage of these changes. Because India, the most important resource we have is human resource. And this is something which in developed countries and all over, we are not finding people. So my request is that kindly also important, industry is very, very important. And industry, the technology, we have to find some mechanism to catch the moving target. So that will be very, very important. And second is, let's go for the service industry in various sectors for the country as well as internationally. And third is that we must be cognizant of the trends which are going to emerge in our own, this next 5 to 10 years. Thank you. Sir, I'm Shahid Kamli. I'm President, Federation Chamber of Industries, Kashmir, with ex-body for industry here. We congratulate you on this mission, and we hope this comes up. And we see the seriousness of this mission because the whole bureaucracy is there right now, is listening to this all day. We hope this comes up. Industry is the backbone of this mission, but you need to make it technology driven. You should you first improve your curriculum of all the ITIs, which will be the driving force of this mission. Then only you will get good people out of it, so that this mission is a success. Another thing is that you need to improve the infrastructure within the ITIs, which your ITIs lack right now. Because unless and until your ITIs are with the latest technology and other things, then only the industry will be able to absorb your particular force will be generating for us. So for that we need work. This Yuva mission is a very good, like we came up with a Yuva mission, it will be supporting with this skill development mission. And without the industry, I think industry will fertilize this mission. For that we need to work with each other very comprehensively. And we hope inshallah this will come up as a success. But you need to work out very hard on the infrastructure, and your infrastructure means the present structure in the university and the staff. I've been very closely monitored with this skill development, where our industry, you may be aware of it, that the industry partners and I mean the chairman of your ITA, number of ITA. So for that you lack the staff there. Your ITAs are almost shut down. You need to improve the courses which you are imparting right now in the ITI. Most of them are redundant, they are not industry friendly. This is my submission. Thank you. Sabhi ko namaskar. I am Professor Ranjana Agarwal, outstanding scientist at Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. First of all, I would like to congratulate you for such a comprehensive presentation. It shows a very, very ambitious roadmap which your department has envisioned. I would like to, many of the participants and the Honorable Secretary also mentioned about the science and technology intervention. Because today's youth, whether he is from a metro or even from a village, he looks after, like, if he is going for a skill, is it like science and technology driven? It has kind of you talked about the stigma, right? So if we stick it with the science and technology, that he is doing something different which ordinary people are not doing, he will be attracted to scale. Here I would like to mention a success story of CSIR-driven skill program which happened in Jammu and Kashmir with the help of ministry and the social society. That is Lavender Revolution, Purple Revolution.
It started with R&D institution. They developed one variety of lavender which is high oil yielding, and it started with one farmer. And now today in JNK there are 5,000 startups who are working with lavender. India has produced 100 quintal of lavender oil, which we were importing all the time from Europe. And so, the young farmers are feeling, different from other farmers who are growing the different crops. So what I believe, for skill we have to create is something, a niche. We are working in silos, your department, education department, but there are so many R&D institutions, labs across the country who have technologies which are very, economical, and they are tested and tried. There is no risk involved. I think you should have a very strong networking with R&D organizations, bringing them in for the science technology innovation. So if you bring these kind of interventions in the skill development, definitely youth will be attracted towards that and will be helping in nation building. Thank you so very much. I just want to say something. First of all, congratulations, wonderful presentation. Seeing it as a researcher and a teacher looks like a thesis. If any of the PhD scholars will do it, he'll take at least 3 years to, collect the data. Very well, organize the objectives, that the data you have collected in a way, how the discussions have been put up, the recommendations have been put up. In fact, a clear roadmap, even for the academia, for the institutes like University of Kashmir, we can see number of our faculty members, our doctoral colleges, Professor Ejaz is here. All the colleges are affiliated to University of Kashmir. My interest to come over here was, after seeing your schedule, I thought this is what we need to, be aware of, and we should definitely attend these sessions. So I really congratulate you. I would like to answer, Mr. Bakshi from Chamber of Commerce was here, pertaining to the implementation of NEP 2020, that's our National Education Policy, which has been already implemented in our respective affiliated colleges all over the JNK in 2022 itself. Very soon, the first batch of NEP 2020 will come up. Yes, and I really feel so happy and satisfied that this particular exercise has been done at a very crucial time and a very appropriate time, and lots of takeaways for the educational institutes, universities, colleges, and even for the schools. There will be, and definitely, all the universities, as you know, have been, connected with Yuva Mission for a long time. I attended initially many of the meetings. Professor Bali is here, who's connected with it, and seeing the act of Yuva Mission, it's not the one-day job, two-day job. Over the months, you have been working with all the stakeholders, and a very good act has come out. So definitely, a roadmap has been framed. I would say that for our Directorate of Lifelong Learning, a skill center long time back, developed in 1980s. So definitely, JNK has been giving skill to the youth. Recently, काफी देर से दे रहे हैं to the community, चाहे वो literate हो या illiterate हो, even literacy skill through our DLL we have been giving. And again, to the question, we have to upgrade our skills. Definitely, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेन करेंगे. यू कांट इमेजिन कि हमारे जो कुछ बच्चे हैं कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, दे आर वर्किंग फॉर द फर्म्स जो बाहर है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आउटसाइड द कंट्री है, ग्लोबली ऑनलाइन वो जॉब करते. सो वी ट्रेन देम, वी गिव देम अपस्किलिंग. डेफिनेटली थ्रू दिस पर्टिकुलर रोड मैप ये सब चीजें आ जाएंगी. ये एक पहल है, एंड यूनिवर्सिटीज आर विद दिस particular roadmap, and definitely, connect
that will be there with the universities will definitely make it very successful. उनके एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, एक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, एक थोड़ी बहुत सोच भी है, तो definitely you know we are looking this is what happened. Thank you very much. I'm audible. Sir, Jai Hind. My name is Ashutosh and I represent Pan IIT Alumni Foundation.